Good morning, everybody, and a very warm welcome to third edition of Ficki's Roads and Highway Summit, accelerating the road infrastructure, New India at 75. Ladies and gentlemen, we are most delighted to have the Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji amongst us today. Before I invite Mr. BVN Rao, Chairman Ficki Committee on Infrastructure, I would request him to please hand over the green certificate to the Honorable Minister. Ladies and gentlemen, this green certificate is Ficki's commitment to plant 10 trees on the name of Honorable Minister at Sundarban National Park in West Bengal. In keeping with the sustainability initiative at Ficki, instead of giving a bouquet of flowers to our dignitaries, Ficki presents a bouquet of trees to our Honorable Minister. Thank you. May I request Mr. BVN Rao to please extend a formal welcome to the Minister. Thank you, Nirja ji. Good morning, gentlemen. Good morning, friends. Nitin Gadkari ji, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India. Shailesh Pathak, Co-Chairman, Ficki Transport Infrastructure Committee. Senior officials from the government, distinguished speakers and delegates. It is my proud privilege to welcome Shri Nitin Gadkari ji to the Accelerating the Road Infrastructure, New India at 75, third edition of the Road and Highway Summit. Sir, thank you for taking out time to be with us today, and indeed we are extremely grateful to you. Ladies and gentlemen, no introduction is needed for Nitin Gadkari ji. He is the man of action, implementation, and resolution. This is what the third point is very important for us to sustainable. And I'm happy to report that the National Highway Authority of India has recently created Guinness World Record by successfully completing construction of 75 kilometers of continuous bituminous concrete road in a single lane in less than 5 days. It is a remarkable event, and it is in line with the target of 100 kilometers per day Mantriji has kept for himself and to all of us to achieve in that time. This year, when the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is infrastructure that will surely be recognized as a major hallmark in country's list of achievements. Infrastructure development will continue to be the key to achieve developed India by 2047 as envisaged by Prime Minister recently. The government has taken several new initiatives to support the business and accelerate the pace of construction in the industry. To name one of the major ones, Government of India has planned 26 green express highways, which are expected to be constructed by 2024. I was told foundation stone for some of these projects have been laid recently, and these new expressways will reduce the travel time as well as the distance between main transport hubs, and it will help bringing down the logistic cost at least by 10%. I would also like to highlight the initiatives of Government of India to improve the commuter experience on national highways for both passengers as well as the truckers. Government is planning to remove toll plazas at highways in due course by toll collection based on the distance traveled by vehicle on a particular highway using the satellite navigation or the number plate system premeditated by new technology. This modification will not only reduce the time and cost of travel of the users and also save fuel wastage of a toll plaza which we are experiencing. It will enhance India's potential in developing world-class road infrastructure and focus
on the aspect like sustainability, automation in construction, investments in digitization, road safety, which is one of the important aspect always Gadkari ji brings in every session we all. And most importantly, harmony between the private and public sector. This is very important because while public investment by government will be a catalyst, but multiplication will happen with the private investment. Sir, this year at Piki we are celebrating its 97th year of existence, sir. We continue to remain committed on being a bridge between the private sector and the government and support the initiatives taken up by the government of India and developing India's vision of achieving economic, infrastructure, and an overall development from an industry perspective. I would also like to extend a warm welcome to all the eminent speakers from government, financial institutions, and public private sector. This summit will essentially focus on some of the forthcoming trends and technologies that have a vision of making India efficient in management and operation of the highways. It will bring about a world-class road infrastructure through a digitized and automated road construction industry. We aim to create an active platform for exchange of ideas, experience, and best practices among the policymakers. I am confident that there will be some thought-provoking and engaging discussions during the various sessions of the summit today. We encourage the delegates to be productive and healthy discussions. We hope to again insights, direction, and some concrete outcomes with the deliberation. And Vicky will make note of key takeaways with this, from the summit and present it to the ministry for their review. Once again, a very warm welcome to all of you. I wish the discussions at the summit turn out to be as fruitful as expected. Thank you all. Thank you, Mr. B.V.N. Rao. Now, to set the context for today's summit and put forward industry's perspective, I invite Mr. Shailesh Pathak, Co-Chairman, FICCI Committee on Infrastructure, to take the dais. Ladies and gentlemen, it is our great honor to welcome Honorable Minister Nitin Gadkari ji to the third edition of the Highways and Roads Conference. All of you know, and just now Mani Gadkari ji mentioned that how to get things done and how to resolve issues is one very, very strong point for Mr. Gadkari. And I think all of us need to give him a round of applause exactly for that. काम कैसे कराना हो और झगड़े कैसे सुलझाने हो ये आपसे अच्छा बहुत कम लोग हैं जो कर सकते हैं. We are also very happy to be back to a physical meeting and gathering. And I remember मेरे ख्याल से पिछले साल या during the lockdown we had a similar edition of the Highways Conference and I was supposed to give a vote of thanks. And after Gadkari ji's speech there is nobody can say anything. So I said in less than 10 years from now, India's highways will be the same standard as American highways. And Manya Gadkari ji said, nahi, 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 wo 4 saal mein main karke dunga. I remember that. Today, we do know that the highways scenario in all of our country has transformed. And what has really happened is speed and scale of implementation. बातें तो बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, काम कैसे जल्दी हो सकता है. And the major change that under Honorable Minister's leadership has happened is पहले हम लोग 2 lane को 4 lane करते थे, 4 lane को 6 lane करते थे. Now we are making expressway. And the Delhi-Mumbai expressway will be ready in a few months from now. And I'm very fond of my story about in 1990 how I drove from Mumbai to Delhi in 3.5 days. अभी 16 घंटे में चले जाएंगे उससे भी कम 12 घंटे में. And I'm also very happy 12 घंटे में. And what has also happened is technology in highways. So last year in June, I drove from Chennai, Madras to Delhi.
And that took around 3 days. And after 1 month of reaching, I got a challan from Karanji outpost of Maharashtra saying कि आपने speed limit ज़्यादा की थी, मेरा driver चला रहा था वो पढ़ नहीं पा. So this is the kind of change that has happened already. And I have only two suggestions for the consideration of Honorable Minister. Sir, पहला ये है that in, let us say, Nasik to Mysore is 1130 kilometers. It takes around 55 kilometers per hour. 20 घंटे में आदमी पहुंच जाता है. Nagpur to Varanasi is 730 kilometers. 13 घंटे में कार से पहुंच जाएंगे. But the truck takes much longer. So when the road gets built, how do we move the truck faster compared to the car is more about, it's a non-engineering thing. It is more an enforcement. उसके ऊपर आपका अगर ध्यान थोड़ा सा. And one way to do it, sir, is कि अब तो फास्टैग या जो भी ग्लोबल टोलिंग सॉल्यूशंस हैं, we can actually think of ranking of states कि महाराष्ट्र में ट्रक कितने तेजी से बढ़ रहा है और एडजॉइनिंग आंध्रा में कितने तेजी से. विद बिग डेटा एनालिटिक्स using FASTag, this can be done. The second request I had at least was that I had gone to Hangzhou, Shanghai for the G20, and everywhere the flyovers always had a pedestrian underpass, cyclist underpass. So Halme, you had said that DPR should be constructed properly. Maybe the DPR should include not only the motorist but also the pedestrian and the. With these words, all of us are warmly waiting to listen to Honorable Minister Gadkari. Thank you. Thank you, Mr. Pathak. Mr. Bhiven Rao, Chairman FICCI, Transport Infrastructure Committee, Mr. Shailesh Pathak, Co-Chairman, distinguished dignitaries, members of FICCI, colleagues from industries, and all my dear friends. It's really a pleasure for me to interact with you because sometimes I get a lot of good suggestions from your side. So very thankful to FICCI for giving me opportunity. The Indian highway network is one of the important networks in the world. We are the second highest in the world. India, we have got 64 lakh kilometers of road network. The national highway length is only 1.47 lakh kilometers, 2.3. And 70% of the cargo, 90% of passenger traffic. Fortunately, this is the time for the country that we need to expand our network. Our idea is to, before end of 24, we will take it to 2 lakh. Already, Finance Minister has declared the budget about the increasing of the national highway network in the country. The flagship program, which is very important, that is Bharat Mala Pariyojana. The total NH constructed in last 8 years is 78,000 kilometers. The total capital investment of rupees 15 lakh crore for a length of 43,000 kilometers in both the phases. This is the approximately, but my estimate is it will go up to 20 lakh crore. So there is a huge opportunity for investment. In budget 22-23, our NH network will be extended by 25,000 kilometers. That was declaration from the Finance Minister. And we want to take it up to 2 lakh. So before 24, end of 24, it will be 2 lakh. Current logistic cost in the country is 14 to 16. And in the European countries and the USA, it comes to 12%. And China, somewhere it comes to 8 to 10. And somewhere, some part of the India, it can go up to 18. So regarding our export, our trade and business, most important challenge for the industry that how we are going to reduce the market. That is the most important. And my target is to take it up to the 10. It can be possible with your cooperation.
because our first priority is for waterways, second priority for railway, third for road, and fourth for aviation. So when I was a shipping and port minister, we developed a lot of waterways. Varanasi to Haldia, 1,350 waterways is developed. Then from Haldia, the Bengal Sea is there. The Brahmaputra dredging is completed. Even at that time, with the request of Prime Minister of Bangladesh, we have go up to the Mungli, 250-kilometer Brahmaputra in Bangladesh, and complete the dredging. We have completed dredging in Barak River. Then already we have the seashore is available. Now 12 major port and 200 minor. Where I will request all of you that if you can plan for taking water transport, it is going to reduce the logistic cost. So we need an integrated approach. I understand that 100% water transport cannot be. So by going by a road, if the cost, for example, is 10 rupees, going by railway is 6 rupees, going by waterways is 1. So this is very important, and I will request you that the PK should plan that how we can utilize the waterway, how we can increase the water transport. That can be possible. We have Suzuki factory in Gurgaon, and we have other automobile brands available in Chennai. By Roro, Ropax, by special shift, we can take cars from Hyundai and other company which available in Chennai, Kandla, and by Kandla, by railway ticket to Punjab, Haryana, and Delhi. And the same thing from Maruti Suzuki car, we can take it here, we can take it to Chennai, Ashok Leyland factory. So I feel that this can be possible. This is win-win for all the stakeholders. The other important thing is with fuel. This is one of the very important subject touching to my heart. मैंने तो तय कर दिया कि डीजल और पेट्रोल को खत्म ही कर दें और ये हो जाएगा. ये कोई कठिन नहीं है, ये कठिन है पर असंभव नहीं है. Just you take the example, if you can go for LNG as a fuel for truck. If you are spending 100 rupees on diesel, cost for LNG is 40. Now one of the company in Gujarat, they have already manufactured LNG truck, and their capacity is for 1600 kilometers. The 10 LNG pump station, they will manage whole country, and your cost of diesel will be reduced by 40. Now we have the consumption of 4,000 crore liter of diesel for generator set. I will request the people of PK that because of my individual persuasion, now Kirloskar has given me the generator 100% on bioethanol. The ethanol cost is 60 rupees, diesel cost is 110 rupees. We are spending 4,000 crore liter of diesel for this IT towers generator. Then we are using in a construction equipment machinery, we are using diesel. Once I requested to Mr. J, the MD of JCB, to make the JCB on CNG. I have my own tractor on bio CNG. Now we have 5 plants in Punjab and Haryana. They are making bio LNG and bio CNG from rice straw. It is popularly known as parali, the biggest problem for pollution. And 5 ton of parali is giving 1 ton of CNG or LNG. It's a successful. In the Panipat, Indian Oil has started the project where they are making 150 ton of bio-bitumen from parali per day and 1 lakh liter of bioethanol. So now in Assam, availability of methanol is there. The Assam Petroleum is making 100 ton of methanol per day. Methanol rate is 22 rupees per liter and diesel is 110 rupees per liter. If you can convert your all truck transport and buses in Assam and Northeast methanol, will reduce the cost and pollution. Methanol is available there. Already government has started adding of 15% methanol in diesel in North. So these are the lot of things. Even now we are going for hydrogen. This is the fuel for the future. We can use sewage water, and from sewage water we will make that clean water from that. And
For the solid waste management, we need segregation. The rooftop solar will be there, and only 1 crore cost you get the electrolyzer, by which we can get green hydrogen. And my idea is to take the cost of green hydrogen with $1 per kg. It will have a capacity of 450 kilometers. I have got hydrogen, beautiful, well, and this is the future. So ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG, and electric and green hydrogen. It is import substitute, cost effective, pollution free, and you can save your logistic cost. And where now for electric car, now there is a waiting list. People are coming to me to please give your letter that we will get out of turn electric car. The Indian company has increased their share in the automobile as compared with the foreign company. And now we have two-wheeler and three-wheeler available in flex engine. Flex engine means you can use 100% bioethanol in place of petrol. You know that model Camry of Toyota, that is in flex engine with hybrid electric. Actually, that model was that they have 60% petrol and they generate 40% electricity. Now the Toyota in next month going to launch all their models with 100% bioethanol and electric. By this, the rate of the petrol will come 25 to 30 rupees per liter. Already the Bajaj, TVS, and Hero have already manufactured flex engine scooter and motorcycle. The auto rickshaw is available. In Pune, we have 3 ethanol pumps are there, and ethanol is a green fuel. There was one problem: the caloric value of ethanol was less as compared with the petrol. So once somewhere in my noting, I get information that in Russia there is a technology available where the caloric value of ethanol is equal to petrol. Because presently 1 liter of petrol equal to 1 liter 300 ml of petrol. So I just called the scientist to India, take the presentation. And after that, I called Mr. Puri, Petroleum Minister, Mr. Vaidya, Chairman of Indian Oil, and Mr. Ram Kumar from the Research Director Laboratory in charge of India. And they give the presentation. After the meeting, Mr. Vaidya was telling me, sir, the idea is very, very fun, but we are not sure about the success. तो मैंने उनको हिंदी में कहा, ये गाजर की फुग्गी है, बजाओ, नहीं बजे तो खा लो, छोड़ दो. After 3-month trial, the Indian Oil has given me the report that this is success. And now the government has accepted, by which the caloric value of petrol is equal to ethanol. The petrol rate is 120 rupees per kilometer and ethanol rate is 60 rupees. Ethanol is a fuel from the farmer, from the agriculture, which is going to boost our rural and agriculture economy. And our dream is to diversification of agriculture towards energy and power. I always telling to the farmers that अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो. Make green hydrogen, ethanol, alternative fuel. Go for that. Your tractor परली से bio CNG बनाओ, पे चलाओ. It can be possible. मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं है, जिसको लगता है शंका वो मेरे पास आ जाए, मैं सब प्रूवन बता दूंगा. कोई हवा की बात नहीं. Everything is, and this is the time where we need cooperation from people. So first of all, by changing the fuel, you can reduce the logistic cost. Increase one of the problem which I am facing, I am making good road. But actually our first priority is to waterways, second priority railway, third priority road, fourth to aviation. But there is some negative thing is happening. Now the traffic is coming on the road. Whether I don't know I am doing correct or not. Because now the 90% of the passenger traffic is on the road and 80% the goods traffic is on the road. The railway is reducing. This is not the good thing, but I am helpless. Actually, in the wider interest of the country, we need to use more railway, more water. But actually, by making green express highway, you can reduce the cost. The Pathak was telling you can reduce.
Now Delhi to Mumbai for car, it will take 12 hours. Now 3 days before I was in Mumbai for launching of double-decker electric bus, Ashok Leyland for test. So the chief minister was with me, and actually when I was minister in Mumbai, I got opportunity to construct 55 flyovers and Worli Bandra ceiling project, Mumbai Pune Express. So at that time, my dream was there to take it that express highway to connect it to Mumbai Delhi corridor, going for Surat, Ahmedabad, and so I give the proposal to chief minister that I am ready to construct a flyover connecting Worli Bandra after that Virat to Delhi Mumbai highway. The cost coming 50,000 crore. I don't have any problem. Only you give me two. You give me exemption of share of GST for government of Maharashtra in this project, and give me the all aggregate and material without royalty project, and give me some government land. I am ready to invest 50,000 crore. So by which it can be possible from Nariman point to Delhi up to Connaught Place, it will be 12 and a half hour. You will be there. And for truck, it will take 18 to 20 hours. Presently, it takes 50 to 56 hours. So it is going to reduce the cost. When I was minister in Mumbai, there was time taken from Mumbai Pune was 9 hours. Now it is 2 hours. Some people are coming in 1.5 hours. So now we are making the road of the standard that from Delhi to Dehradun 2 hours. Up to end of this year, before December end, we will give that road. Delhi to Dehradun 2 hours, Delhi to Haridwar 2 hours, Delhi to Chandigarh 2.5 hours, Delhi to Jaipur 2.5 hours, Delhi to Amritsar 4 hours, Delhi to Katra 6 hours, Delhi to Srinagar 8 hours, and Delhi to Jaipur, Delhi to now this Meerut. First of it was 4.5 hours, now it is 40 minutes from Delhi. So already the things are moving fast. We are making Chennai to Bangalore with 2 hours. Or remember NHI is here, he is making that. Within 2 hours we will be there. So my suggestion is we are making 12 green express, say 26 green express highway access. So from Mumbai and Pune we have a lot of problems for water, for air. But now from Delhi, from North India, from Gujarat and Rajasthan, the traffic which is going to south, Hyderabad, Chennai, Bangalore, in Kerala, everywhere now that traffic is going to Mumbai, Mumbai to Pune. Then there are two ways, Pune to Solapur, Pune to Kolkata. But now we are making green express highway from Surat. That's Surat to Nashik, Nashik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, and Solapur to Bijapur, and it going up to south everywhere, Hyderabad, Chennai, Bangalore, you can go back. You don't need to go for Mumbai and Pune. It will reduce the air pollution in Mumbai and Pune. So actually, it is just like a heart surgery, bypass. We are making the arrangement just like bypass surgery, where the traffic density is high. We are making the green express. So 100% it is going to reduce the cost. Because of Bharatmala and Green Express Highway, our expectation that we can reduce the logistic cost by 3%. So this is very important. We have already making the highway. I don't want to elaborate it because you can see you can go anywhere in India. You can go to Kashmir, Ladakh, Leh, Northeast, Arunachal, Meghalaya, Tripura, any north side, south side, everywhere there are a lot of development in highways going on. But regarding this Delhi also, this is very important because Delhi is facing the problem of pollution. We are making greenfield corridors 27, express highways 5 numbers, and access control corridors 22 numbers. And that by which the total capital cost is the length of 10,000 kilometers. Cost is coming approximately 6 lakh. Delhi Mumbai 1,400 kilometers is 1 lakh crore. Ahmedabad Dholera 110 kilometers 4,200 crores. Delhi Amritsar Katra 670 kilometers 40,000 crore. Bengaluru Chennai 262 kilometers 17,000 crore. Kanpur Lucknow 63 kilometers 4,100 crore.
These are already in the. So this greenfield infrastructure project, very important. We have conducted route optimization exercise across major corridors and have designed newer alignments which have resulted in minimum 4-lane configuration, reduced travel distance, reduced travel time, lesser fuel consumption. Around 110 crore liters of fuel will be saved every year. Reduce CO2 emissions. Annual reduction of carbon dioxide emission by 250 crore kg. Huge saving in land acquisition cost and duty shifting process. Port connectivity with at least 4-lane highways. Everywhere for 4-lane, there will be 4-lane road. Greenfield alignment brings socio-economic development in the region. And saving in the travel time is going to reduce the cost. Now the Delhi-Mumbai Express Highway, giving just the, you can make the economic study of this project, is 1,382 kilometers. Cost is 1 lakh crore. 100% length is awarded. 70% work is completed. 90% of the work will be completed by end of this year. Trying to make it 100%. Travel time 12 hours by car. मैं 14 बोल रहा था तो थोड़ा 12.5 hours इसलिए कहा कि नरीमन पॉइंट जा रहा. So by car and 20 hours by trucks. And Delhi Meerut Express Highway is already you are experiencing 40 minutes. Train Trans Haryana Ambala Kotputli corridor 313 kilometer. The cost is 12,000 crore and it is already alternative to NH44 section between Delhi to Ambala. Provides seamless connectivity from Himachal Pradesh, Chandigarh and Ambala to ports in Gujarat and Maharashtra. This road is also going to connect Manali also. For tourism also it is very important. The Trans Rajasthan, that is Amritsar, Bhatinda, Jamnagar. 917 kilometer corridor. 23,000 crore cost there. Probably maximum work is completed. Improves connectivity between industrial zones of Punjab, Haryana, Rajasthan and connects them to major ports. So this is going to reduce the logistic cost is very important. Now already I have few information about the other highways. Now the most important thing is I always telling to the people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, knowledge, and for the construction industry we need upgradation of the technology where we don't want to compromise with the quality, but we want to improve the cost quality of the example, make more alternatives for why the steel people are so happy and increasing rate because there is less. If you can make the alternative for cement and steel, you will be happiest. So glass fiber steel we are allowing. Now that lot of technology we are taking, I am telling you about it. But before that, I am telling you about the project of Delhi. Delhi is the capital, but unfortunately, we are facing crucial problems related to the air. We are making roads of 53,000 crores to decongest Delhi. The Eastern Peripheral Express Highway of 135 kilometers, 12,000 crores completed. Dwarka Express Highway, 30 kilometers, we are spending 10,000 crores. Next up to December, we will open that. That is going to reduce the problem of this Delhi Jaipur highway. Then UER2, Urban Extension Road of 6 lanes, 76 kilometers of 8,000 crore, work has already started. Delhi to Akshardham to EP of 6 lanes, 32 kilometers of 3,500 crore, work has started. UP Haryana border to Sonipat 4 lane, 45 kilometers, 1,200 crore, already started. Gurgaon to Sohana 6 lane, 22 kilometers, 2,000 crore, work has started. Gona to Sonipat 4 lane, 38 kilometers, 1,500 crore, work has already started. Flyover and underpass on Delhi Gurgaon road of 1,000 crore, already it is in tender. Now after that, just 20 days before, I was there with our member NHI, Additional Secretary Mr. Ghosh and Manoj, with in Gurgaon of the program of BCG and climate change conference was there. We were stuck up in the traffic. तो दोनों मुझे कह रहे थे ये ट्रैफिक, बोला अच्छा हो गया तुम
जब मैं फंसा हूँ तो लोग देख रहे हैं और कितना आनंद उनके चेहरे पे आ रहा, देखो बोले हम मिनिस्टर भी फंसा है फिर भी नहीं, कितने लोगों को तकलीफ हो। तो मुझे पूछे कि मैं बोला तुम्हारे कारण है, तुमने गलती की। अगर धौला कुआं से पूरा फ्लाईओवर बनाते डबल डेकर और पूरा गुड़गांव के आगे ले जाते तो आज काय के लिए ट्रैफिक। तो अभी हमने एक अच्छा काम किया है कि महाराष्ट्र सांगली साकोली में हमने ब्रिजेस तोड़ दिया, ब्रिजेस को तोड़ दिया। और अभी हम चेन्नई में और पूना में बना रहे एक बना है। वो रोड ऐसा है कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो ये 3-3 लेन के है, वाघोली से शिरूर और तळेगांव से शिरूर और उधर चेन्नई पोर्ट से चेन्नई के बाहर। ऐसे 2 बड़े प्रोजेक्ट हम डिजाइन कर। अब मैंने सब जगह कहा कि जहाँ पीसीयूज 30,000 के ऊपर है, 40,000 के ऊपर है, वहाँ डबल डेकर ब्रिज, सिंगल डेकर। मुझे मालूम नहीं, टेक्निकली वेरीफाई कर रहे हैं कि धौला कुआं से ये ब्रिजेस बीच में तोड़कर उसी एक ही पिलर पर 2 लेयर बन सकती है। तो अभी वो इंजीनियरिंग चैलेंज है, वो हो जाएगा। तो आप धौला कुआं से चढ़ गए गुड़गांव के बाहर, इसमें आप उतर सकते, वो होगा तो आपका ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। अब मैंने जब बनाया तो मुझे याद नहीं, दिल्ली ज़्यादा मालूम, इटको चौक में बनाया था, हीरो का चौक में बनाया, ऐसे वहाँ मैंने बीच बीच में बनाया पैच वर्क में। अनुभव से मुझे ध्यान में आया कि ये पैच वर्क इज नॉट, इसलिए अब मुंबई में ये गलती हो गई। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मैंने बोला यही हम मुंबई में बनाते हैं कि नीचे में रोड, ऊपर में मेट्रो और ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। बहुत अच्छा। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई के लिए हो सकता है, हम उसके ऊपर जाएंगे। दिल्ली के ये पूरे रोड की संख्या, ये कॉस्ट 53,000 करोड़ है और ये 60,000 करोड़ के ऊपर। इसमें बाद में भी और प्रोजेक्ट ऐड किए हैं जिससे दिल्ली का पोल्यूशन। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इन्वेस्टमेंट, तो मेरी बात को गलत मत, मुझे कोई इन्वेस्टर के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। मैं ये नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, इन्वेस्टर मेरे पास आते तो मैं करता। पर अब मेरे दिमाग में आया कि अब मैं गरीब लोगों के पैसे से रोड, और इसलिए हमारे पास 5-4 मॉडल, एक बीओटी, एक हाइब्रिड एन्युटी, फिर एक ईपीसी, फिर एक टीओटी और अभी हमने बनाया इनविट। अब हम जल्दी अगले महीने में कैपिटल मार्केट प्रोजेक्ट, और वो सीबी के काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था, तो मैं 4 प्रोजेक्ट को लेके जा रहा हूँ। तो मैंने ये तय किया और मैंने सुझाव दिया, सीबी के अप्रूवल किया है कि कोई 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं, और वी विल एश्योर हिम रिटर्न 7 to 8%। तो जो छोटे छोटे सफाई कामगार, चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, पत्रकार, इनके पैसे से रोड बना। कल मैं हमारे यहाँ ट्री बैंक की योजना के लिए भूपेंद्र यादव जी के साथ मीटिंग, तो लेबर मिनिस्टर, तो मैंने कहा 7 से 8% बोले हम पूरा पैसा दे देंगे, हमारे लिए तो रिटर्न इतना बहुत बड़ा हो गया। तो 10 लाख के ऊपर करेंगे और फिर बाकी रहा तो आप लोगों के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी रहा तो फॉरेन इन्वेस्टर को। अब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को गरीब आदमी को लगे और उसका बेनिफिट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड हमने बनाया। We are formulating the new model to allow small investor to invest in infra project. We will soon list InvIT on stock market so that retail investors can trade units of InvIT, offering an opportunity to the common citizen, poor people with low and middle income to invest in the infrastructure project through InvIT, assuring 7 to 8% monthly return. This is very important. कि बैंक के डिपॉजिट पर बैच कम होते जा, जो रिटायर्ड लोग हुए उनके सामने समझ। गोइंग फॉर कैपिटल मार्केट एंड ट्राई करेंगे, अब ये ट्राई एंड एरर मेथड है, तो 10 लाख का शेयर पर पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर NHAI shall be monetizing various road assets through a mix of InvIT and toll operated transfer TOT, which shall provide returns to both institutional and retail investors. अब BOT भी बढ़ाएंगे। BOT इसलिए नहीं बढ़ाया कि बीच में सब
आईसीयू में थे वो बोले हम अब पीओटी कैसे भरे, थोड़ी तबीयत सुधरी है, आईसीयू के बाहर आए, कम से कम 30-40 लोग होंगे तो कंपटीशन होगी, 4-5 लोग होंगे तो कार्टेल कर लेते हैं, होटल में बैठ के तय कर देते कि किसने कितने लेना, प्रॉब्लम आती। तो अभी एक 20-25 लोग अगर बीड करने वाले आएंगे तो हम निश्चित रूप से ये बीओटी भी प्रायोरिटी देंगे। एक अच्छी योजना हमने बनाई और उसमें आप लोग भी सहयोग। वैसे मैं रोड वाला नहीं हूँ, मैं एग्रीकल्चर में ही मैं काम करता हूँ, एग्रीकल्चर ही मेरी पैशन है, वो में ही। तो हम मेरा एक एनजीओ है, मैं 13 साल से उसको भी वर्ल्ड अवार्ड भी। तो हमारी थीम है दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के। गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी। और इसमें हमने बहुत काम किया। थोड़ा सा मैं जियोलॉजी जानता हूँ, कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो पानी नहीं, जियोलॉजी में जियोलॉजी, जियोफार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला। तो वो रॉक्स के फॉर्मेशन पर एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। द डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मेटल। तो हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते नदी नालों, और जब तक पानी पीने वाला स्टार्टा नहीं लगता, रॉक नहीं लगता, तब तक नीचे जाता। ये प्रॉब्लम आप लोग नहीं समझोगे, ये हम अनुभव कर रहे हैं। मेरे यहाँ विदर्भ में, महाराष्ट्र में 10,000, मेरे खेती में आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पानी का। मैं 48 रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मैंने बनाया, 19 डीपीआर तैयार किए। और रिवर कनेक्टिविटी योजना को मैंने कहा ये इन्वायरमेंट वाले बहुत तकलीफ देंगे, इसको रिवर कनेक्टिविटी मत बोलना, इसको बाढ़ प्रोटेक्शन। जो वो इकोनॉमी के लिए वायबल है। एक बार आप पीके में ये भी करिए। अभी ये पंचेश्वर है नेपाल में, 10 दिन पहले नेपाल के उप प्रधानमंत्री मेरे पास, मैंने कहा मैं आपको समझाता हूँ अनऑफिशियली, आप देख। पंचेश्वर के लिए 50,000 करोड़, 6,000 मेगावाट पावर होती। मैंने बोला आधा पैसा लैंड में तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए सब भारत सरकार देगी, ऐसा तो। और आप 2,500 मेगावाट पावर लो, नेपाल को पावर कितनी लगती है, 2,500 मेगावाट, पूरी पावर आप ले लो 2,500 मेगावाट, उसका इनकम ही आपको मिल जाएगा। और पंचेश्वर के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ खत्म हो जाएगी, तो सबको विन विन है। मैं जब था तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल खूब झगड़े थे। 1970 से 23 झगड़े थे, मैंने 16 सुलझाए। सब मुख्यमंत्री आते थे, बोलता था दरवाजा बंद कर, और बंद करके मैं बोलता था जब तक तुम सोल्यूशन नहीं निकालोगे दरवाजा नहीं। आपको ताजुब होगा, 17 झगड़े मैंने मिटा दिए। ये पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, तो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा, 3 को बाकी भारत। हमारे 3 नदियों का अधिकार का पाकिस्तान। और इधर पंजाब हरियाणा एक दूसरे से इतना झगड़ा करते कि पानी के लिए, पानी की कमी नहीं है। अभी मैंने इंदिरा कैनल जो बनाया, उसको केवल कॉन्क्रीटिंग किया 2200 करोड़ का, तो राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट को पानी की कमी नहीं है। अभी ये पोलावरम जो बना है, मेरे समय में 60,000 करोड़ का, बहुत मैंने मदद। कालेश्वर बना, काफी तेलंगाना का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता, और इसमें से हाइड्रो पावर भी आ सकती है। और 1 एकड़ में पानी ड्रिप इरिगेशन से जाएगा तो 2.5 गुना उत्पन्न पड़ता है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, वो इरिगेशन में, उसके भी पोटेंशियल को आप जरूर कभी निकालिए। ये अमृत सरोवर हमने बनाया। अकोला में एक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ है, मैंने उनको 1 रुपया खर्चा नहीं, यहाँ रिकॉर्ड हुआ ना 75 किलोमीटर, वहाँ 36 तालाब बनाया फुकट में। और जो 450 एकड़ इरिगेशन था वो 10,000 एकड़ हुआ, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए। और जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे वहाँ नीम के पेड़ लगे और कड़ू नीम के पेड़ लगे, और बढ़िया इरिगेशन बढ़ा, इनकम बढ़ा, और परिस्थिति 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट। ये हमने अजिंठा देखा होगा, बुल्डाना अजिंठा रोड, ब्लैक रॉक, पूरे रोड को हमने
नदी नालों के साथ झरनों को, तालाब को खोली कर हमने स्कीम बनाई कि हमारा रोड कॉन्ट्रैक्टर जो एग्रीगेट यूज होता है वो वहां से निकालेगा और रोड में यूज करेगा, उसके पैसे रॉयल्टी सरकार नहीं देगा। आम के आम गुठली के दाम फुकट में। तो अब रेलवे में, इरिगेशन में, सब जगह ये हो सकता है वाटर कंजर्वेशन। और ये अगर हो गया तो देश का सिंचाई बहुत बढ़, और इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो हमने लिया है। बाद में इसके साथ साथ टूरिज्म की कनेक्टिविटी भी हमने। टूरिज्म ये ऐसा फील्ड है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे। मैं फिर से फिक्की को रिक्वेस्ट करूंगा। अब रोड रोड पर मैं बहुत बोल चुका हूँ, यहाँ आता हूँ, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, तब आप देखते ही हो। अब आप अगला सेमिनार लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक में रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे पार्किंग प्लेसेस, लॉजिस्टिक पार्क, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और डॉफल मेयर ने फिलीपाइंस में एक बनाई है, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस। मैंने मुंबई में प्रपोज किया, अभी कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं। अब धौला कुआं से मानेसर मैं बनाना चाहता हूँ, सरकार के पैसे की जरूरत ही नहीं, 22 का आया रहा और रोड मेरा ही है। वो हाइपर लूप वाले मिले तो मैंने बोला आओ ना, आपको बुलेट ट्रेन बनाना हाइपर लूप है, मैं 24 घंटे के अंदर लैंड देता हूँ दिल्ली मुंबई, करो। अब रोड इज रेडी। मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। अब 6 महीने में देखो 50,000 बसेस हिंदुस्तान में आएंगी, डबल डेकर बसेस आएगी, लग्जरी बसेस यूरोप की जैसी इलेक्ट्रिक। तो उसमें ये रोप वे, केबल कार, अभी 165 प्रपोजल मैं मंजूर कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसमें आप आओ, बहुत सी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को ले आओ, और इसमें कितना बड़ा काम हो सकता है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। अभी हम राम वनगमन मार्ग 258 किलोमीटर 5,000 काम चालू किया। राम जानकी मार्ग और 436 किलोमीटर 2,000 करोड़ यूपी और बिहार में काम चालू हो गया। ब्रज कोसी, ये मथुरा में हम लोग जो प्रदक्षिणा होती है, वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 235 किलोमीटर 4,000 करोड़ स्टार्ट। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 4,500 करोड़ स्टार्ट हो गया। बुद्ध सर्किट, पूरे वर्ल्ड के बुद्ध, भगवान बुद्ध, तो बुद्ध हमारी विरासत, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में सब स्थान है। और ये बुद्ध सर्किट में हमने 419 करोड़ 20,000 करोड़ का लगभग कंप्लीट। पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, इतने टूरिस्ट आते हैं। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। तो ये बुद्ध सर्किट, 4 धाम प्रोजेक्ट, पूरे साल भर आप जा सकोगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हमने वहां रोपवे का भी काम शुरू कर। और वहां कितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स 3 गुना बढ़ेंगे। मैं चुनाव के प्रचार के लिए गया था, मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने बड़े अभिमान से कहा, नितिन जी आपको पता नहीं हमारे कितने भाषण में 12 फ्लाइट आती है रोज की। भाषण में चिंता मत कर, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट। अब मुंबई से पुणे 10 फ्लाइट आती थी जेट एयर इंडिया, अब एक भी नहीं आती है, क्योंकि 2 घंटे में देहरादून जाएंगे तो यहाँ से एयरपोर्ट जाओ 1 घंटा, फिर वहाँ 1 घंटा बैठो, फिर जाने के लिए 1 घंटा, फिर घर जाने के लिए 1 घंटा, 5 घंटे के बजाय 2 घंटे में घर पहुंचेंगे, तो कौन जाएगा। तो आने वाले समय में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट्स, ये सब वहां बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है। महाराष्ट्र में हम पालखी मार्ग बना रहे, देहू आळंदी, 12,000 करोड़, काफी काम 570 करोड़ पूरा हुआ। फिर कैलाश मानस सरोवर टू पिथौरागढ़ 90% काम पूरा हुआ। -6 डिग्री और -8 डिग्री में वहां मिग 26 के हेलीकॉप्टर से मशीन वहां लेके गए। बहुत कठिन, बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में है। मैं तो हेलीकॉप्टर से भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के बारे में बहुत डर लगता है। आज वहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं। जुआरी ब्रिज गोवा का, अब देखो जरा, इतना सुंदर बना, के ऊपर व्यूअर गैलरी बना, और कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, पूरा गोवा दिख।
स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बेट द्वारका, जो ओखला सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं द्वारका, तो मैं आपको यही कहूँ, नर्मदा में एक ब्रिज अच्छा डिजाइन करके, तो उसमें काफी बड़े प्रमाण पर एस्थेटिक। मैं आपको एक बता दूं, मुझे बड़ा आनंद है इसमें। मैं नागपुर में कल 24 तारीख को उसका पहला पायलट इनॉग्रेशन। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है, जिसकी फ्लोटिंग फाउंटेन की 50 मीटर, उसका आर्किटेक्ट है फ्रांस से, उसके पंप आए टर्की से, उसका संगीत है A R रहमान का, उसकी अंग्रेजी कमेंट्री है अमिताभ बच्चन की, उसकी हिंदी कमेंट्री है गुलजार की, मराठी कमेंट्री है नाना पाटेकर। 5 ऑस्कर विजेता उस पर काम कर, और आपको ताज्जुब होगा कि 4000 लोगों की गैलरी बनी, और उसके म्यूजिकल है, और रेवती करके एक तमिल तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी, उसको मैंने काम किया था। इतना सुंदर काम किया है उन्होंने, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। उसके बाजू में मैंने 12 मंजिले बिल्डिंग बनाई, 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग, और तीसरे मंजिले से 30,000 स्क्वायर फुट का फूड मॉल, 12वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स, और 13वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। फिर मैं गार्डन बना रहा हूँ। देखो, जिसको इंटरेस्ट है वो करता है, मुझे खास है मैं करता हूँ। मैंने वो अपने MP फंड से 50 लाख रुपए दिए, तो पूरे देश से मैंने फ्लावर इकट्ठा किया। 265 जातियों के कमल के फूल लाए, वो तेलंगखेड़ी बगीचा है, उसको मैं कमल का गार्डन, 265, 350 जातियों के अभी तक गुलाब कलेक्ट किए, ग्रीन हाउस तैयार किया। और वहाँ बहुत बड़ा, जैसे आप वैनकोर में गए होंगे, वो बुचर्ड गार्डन देखा, दैट इज माई इंस्पायर, वैसे गार्डन 350 प्रकार के गुलाब डेवलप किए। और मैंने कहा कि लोग 100 रुपए का टिकट निकाल के आने चाहिए, फोकट मत देखो। और इतना सुंदर बनाया कि नेचुरली हम टाइगर कैपिटल, तो जो नागपुर आता है अभी टाइगर देखना, तो एक एक दिन 8-8 टाइगर देखते ताड़ोबा में। तो टाइगर देखने के लिए रोज खूब लोग आ रहे, मतलब ये सब फाउंटेन देख। तो टूरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों को केवल रेस्टोरेंट चाहिए, वॉशरूम्स चाहिए, पार्किंग प्लेसेस चाहिए, क्लीननेस। अगर इतना भी हुआ तो इस देश का टूरिज्म इतना बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत बड़ा है। इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और आप जरूर इसके ऊपर विचार करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में ये बिटुमिन रोड कैसे भी बनाओ, 2 साल में। एक अल्ट्राटेक में रिटायर्ड हुए टेक्निकल उन्होंने एक वाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी, तो मैं भी अभी, कल मेरी मीटिंग है हमारी सेक्रेटरी के साथ, तो कहने वाला हूँ कि ये क्या है, ये सीमेंट वालों ने कार्टेल करके मेरा आया, तो मैंने इसको बंद किया, तो कॉन्क्रीट। और मैं बोला अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढो, इसका लेवल कम करो ताकि इनका सीमेंट कम। तो अभी हम लोग 8 इंच का वाइट टॉपिंग, और उसमें रबराइज बिटुमिन को, उसका सरफेस बिटुमिन सरफेसिंग करेंगे। तो मुझे लगता है ये 25 साल कुछ नहीं होगा इसमें। हम लोग 20,000 करोड़ साल के मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हैं, और मेंटेनेंस एक ऐसा विषय रहता है, इसमें नेता भी खुश होते हैं, अधिकारी भी खुश होते हैं, और बार बार मेंटेन करने में बड़ा आनंद, नुकसान जनता का होता है। अभी ये परमानेंट रोड बनाना चाहिए, उससे कुछ लोग नाराज होते, ठेकेदार नाराज होते, हमारा धंधा खत्म। और ये बनाया तो 25 साल, मैंने नागपुर में पूरे कॉन्क्रीट रोड, 25 साल कोई गड्ढा नहीं। मुंबई पुणे हाईवे बना है ये, अब यहाँ कोई गड्ढा नहीं है, 25 साल हुए। मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। बाद में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, उसकी बात तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग जो टनल कर रहे हैं, वो टनल केवल हम 2 लाख करोड़ की टनल। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आप अलग से एक बार करो। मैं चाहता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, इंडियन मशीनरी, और इसमें हमने जो टनल बना रहे हैं, में जोजिला टनल में 5,000 करोड़, वो एसोसिएम जो है, वो आपकी पैरेलल हुई ऑर्गेनाइजेशन है, वो में भी मुझे मालूम नहीं रिलेशनशिप कितनी अच्छी रहती है, कॉम्पिटिशन होती है। उन्होंने बहुत काम किया मदद की। अब जोजिला, झेड़मोर, इकियारा, ट्विन टनल विथ उन्हीं नालान, केवल 60,000 करोड़ की टनल तो कश्मीर। और आने वाले समय में ये जो 24 टनल्स है, 34 टनल्स है,
93 किलोमीटर की वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 15 टनल 40 किलोमीटर की ऑपरेशनल है और टोटल 282 किलोमीटर 2.5 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं और 2024 तक ये काम शुरू करेंगे और 24 टनल जो है 149 किलोमीटर की उसके डीपीआर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं 2 लाख, काफ़ी जगह हमारे पास है, 30-40 जगह हमने जालना और वर्धा में, वहाँ हम लोग ड्राई पोर्ट थे, सैटेलाइट पोर्ट, वो भी एक्वायर। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि हमने काफ़ी कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, वेयर हाउसेस, बस पोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, उसके बाद पार्किंग प्लाजाज और रोड साइड एम्यूनिटीज 650, 70 का काम चालू हो गया है। उसमें हेली पोर्ट है, ड्रोन पोर्ट और इसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि ये इन्फोर्समेंट कंक्रीट की जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर का डिस्टेंस 30 मीटर, वो 120 मीटर तक जा सकता है। जो जो बीम है वो स्टील फाइबर में, तो हमने भी मैंडेटरी किया। सॉइल स्टेबलाइजेशन पर हम काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एग्रीगेट लेने की जरूरत है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को हम इंकरेज करें। शुरुआत में अड़चन आती है, पर धीरे धीरे आप भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हमें दीजिए, जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, इफ द कॉस्ट सेविंग इज देयर 100% वी विल। और इसलिए अलग अलग सेक्टर पर जाकर आप और अध्ययन करेंगे। तो मेरी एक इच्छा है कि इंडियन इंडस्ट्री ये आगे आए, ये इन्वेस्ट करे, ये काम करे। और जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, इसमें हमारे रोड सेक्टर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आप सबके सहयोग से वो पूरी होगी, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister. If one person single-handedly can be credited for changing the roadmap of India, that's, and I mean quite literally, it will be Mr. Gadkari. So your innovative ideas are not just increasing the pace of infrastructure development in the country, but also bringing in transformational impact on the socio-economic prosperity of countrymen. With this, I would formally invite my colleague Manam Bajunta to deliver the word of thanks. Thank you, Nidya. It's my pleasant duty to propose a vote of thanks with the insightful address by the Honorable Minister. We have just made an exciting start of the third edition of our Roads and Highways Summit. Honorable Minister, we are most grateful to you for your gracious presence and sharing with us your valuable thoughts and views on the sector's development and many other important related areas. Sir, we are immensely encouraged by your continuous guidance. Thank you very much. Thank you, Mr. Bivian Rao, Mr. Shailesh Pathak, office bearers of the FICCI Infrastructure Committee, and all the esteemed members of our committee who are not only present here today and have been giving us valuable input towards the functioning of the committee as well as organizing this summit. Our sincere most thanks are due to senior officials from the ministry and various agencies who have for being kindly present here today, our distinguished speakers, delegates, industry members, to one and all who have helped us to make this summit a success. I wish to thank our friends from media for their kind support and coverage. Last but not the least, I would like to thank our partners and sponsors. Silver sponsor, Silver partner MSP Steels, SRMB Srijan Private Limited, Action Construction Equipment Limited, and associate partner Geosys India Infrastructure Private Limited for kindly supporting this summit. Thank you, ladies and gentlemen, for your kind attention. I'll give it back to Nidhi. Thank you very much, Manav. As the Honorable Minister departs, we will not have the tea break. We will immediately start session 1. And I invite my colleague Kumar.
Kindly allow us 2 minutes of time for doing the session changeovers. We will not have any break and will continue for the business session 1, that is on accelerating developments of roads and highway sector, current trends, concerns and future roadmap. I would like to now invite the speakers for business session 1. May I take this opportunity for inviting Shri Amit Kumar Ghosh, Additional Secretary Highways, Ministry of Road Transport and Highways, Mr. R.K. Pandey, Member Projects, NHAI, Mr. Satish Parak, Managing Director, Ashok Buildcon Limited, Mr. Arun Kumar Sharma, CEO Transportation Business, GMR Group, Mr. D.K. Sen, Whole-Time Director and Senior Executive Vice President, L&T. He's going to be joining us any moment. And last but not the least, our moderator for the session, Mr. Jagan Narayan Padmanabhan from CRISIL. Requesting all the speakers to kindly come on the dais, please. Requesting all delegates to kindly be seated. I now hand over the session to the session moderator, Mr. Jagan Narayan Padmanabhan, Practice Leader and Director, Transport and Logistics, CRISIL. Yeah, good afternoon. It's indeed a pleasure to moderate this session. But at the start, I'm going to be inviting Amit Kumar Ghosh, Additional Secretary Highways, Ministry of Road Transport and Highways, to give a special address.